market. So yesterday there was a kind of a bloodbath in second half of the market, जिसमें की बात करें कि 230 तक इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव नोट्स पे ट्रेड करता नजर आ रहा था, बट सडनली एट 235 मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड रैली या यूं कहे एक ब्लड बाथ टाइप का मूवमेंट देखने को मिला. एंड एट द एंड मार्केट में सेंसेक्स जो है 843 पॉइंट्स के लॉस के साथ 57,147 पर क्लोज हुआ. बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ऑलमोस्ट लॉस्ट अराउंड 257 पॉइंट एंड 17,000 मार्क्स के नीचे 16,983 पर क्लोज हुआ. मार्क्स पर क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी also lost around 380 points and closed at 36,712. So this is what the market yesterday, where somewhere was positive trading session was about to close, but suddenly there was a fall in the market, and because Bank of England का एक statement आया था that they are going to stop their bond control or say activities in the bond market to control the volatility of the bond market in England by the Bank of England. For they going to do it for only for next 3 days only. So that was the negative sense sentiments that was created from that particular side. बात करें FIIs की तो yesterday there was a biggest amount जिसके थ्रू FIIs ने सेलिंग किया है. अगर बात करें वीकली में तो वीकली में 66,752 करोड़ का सेलिंग है, बट उसमें भी 4,613 करोड़ का सेलिंग FIIs ने yesterday मार्केट में किया हुआ है. वही बात करें DIIs की तो DII हैज बॉट अराउंड 2,431 करोड़ का शेयर्स. But moreover, if we can see the FII selling, they will keep on selling on the emerging markets or you can say the developing countries. And उसमें although they are not selling heavily in India, but still they are keep on selling on monthly, weekly, and daily basis. The Dow Jones somewhere close around 36 point of a gain. और S&P 500 एंड नैस्डैक की बात करें तो 3588 पर 23 पॉइंट्स के लॉस के साथ S&P 500 में क्लोजिंग हुआ है. एंड द टेक इंडेक्स दैट्स द नैस्डैक ओवरऑल अगर लास्ट 2 मंथ में देखें तो अराउंड 30% का सेलिंग देखने को मिला है, जिसमें कि yesterday it fell around 115 points and closed around 10,426 rupees. DAX also fell, and European markets continuously falling because of the bond market instability, as well as the FTSE which is close around 74 points loss. Japanese in morning you can see all over the globe there was a continuous selling on FIIs because of major 3 things. Number 1, there is some fear creating through COVID as well. Next one is the quarterly earnings of the companies, and the third one is that the rising interest rate. Like today there is a CPI data in the market, so in that if CPI data comes higher, so that would again trigger a fear of increasing interest rate. So that's the fear in the market which is keeping the markets toward the downside, and continuously market जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं. अगर एशियन मार्केट की बात करूं तो जापानीज इज डाउन बाय 37 पॉइंट्स. साउथ कोरियन इज अराउंड फ्लैट ऑल्दो इट्स minus 3.14 is the loss, and Chinese and Hong Kong is also down by around 1% or Chinese down by 0.4%. So it's the overall sentiment, the market is bearish. And Hang Seng that was 2 months back it was trading around 26,000. 2 महीने पहले Hong Kong index that the Hang Seng was trading at 26,000, now trading at 16,000. Almost lost around 35 to 40% over the last two months. So this is overall sentiments right now is bearish, though markets are oversold as far as the US market is concerned.
any kind of any type of data from CPI, if CPI data थोड़ा भी अच्छे आते हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है on the Dow Jones side. So that's for about the market. And today about our Nifty, that the SGX is trading around plus 6 with a plus 6 points, which is around flat note, and it is going to open around the flat around 17,000, sorry, around 16,986. It is the wrong data is put over here. Currency market, dollar index is continuously and is making higher highs, but in last few days or say 2 or 3 days, dollar index में भी माइनर सा बिकवाली देखा गया है. लाइक डॉलर इंडेक्स यस्टरडे के कंपेयर में डॉलर इंडेक्स में एक say 5 cents, and today rupee has lost around, I mean talking about yesterday, it lost around 10 paisa and closed near 82.27 compared to the previous day closing. And this is because RBI has to enter the market. अब वो like they have said that उन लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू यूएस डॉलर का सेलिंग नहीं करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ रूपी उन्हें इंटरवेन होना पड़ा, एंड दे विल सेल $1 billion of US dollars in the market to control this particular volatility or say rupee weakening in the market. Talking about the crude oil also fell because of the fear in the emerging countries or say the overall global markets where the demand of the crude oil is getting weaker. So from 95 of the recent high, crude oil अभी $88.77 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, and it is around today's loss is 56 cents. On technical chart, Nifty is now although closed below 17,000 mark, which is to be confirmed by today itself as well. So next upcoming days में जो है short आज और कल के लिए बात करूँ तो 16,900 and 16,700 can be a recent support area where Nifty can take support, and resistance की बात करूँ तो 17,350 and 17,472 is what I assume that it should act as a resistance. Although max span is around 17,100, so market is likely to hover around 17,100 or 17,000 range, but this is what the range as per the technical chart, and also it is trading below 200 DMA. So the overall breadth of the market now is bearish. Volatility index, that's the VIX, वो भी एक तरह से देखा जाए तो 19 और 18 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा था, बट सडनली इट हैज जम्प्ड इन लास्ट 2 days and it came up to 20.55, and still it is going to it is looking to be upside. So this is going to be a bit negative sentiments over the Nifty or the Indian market as well, though it is outperforming the world market, but still it would follow the world market at some extent. And the derivative summary, that's the open interest. अगर बात करें तो एक सडनली एक जंप देखा गया है 15,400 एंड 15,000 ओपन इंटरेस्ट में, पुट ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा जंप देखा गया, एंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो फॉलोड बाय 17,100 जो कि 24,056 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है 17,100 के कॉल ऑप्शंस में, एंड पुट ऑप्शन की बात करूं तो 16,000 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन में 33,62,000 का कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है. मेजरली द पॉइंट टू बी नोटेड हियर के 15,400 एंड 15,600 चेंज देखा गया है ओपन इंटरेस्ट के फॉर्म में. सो दैट इज समवेयर गिविंग द हिंट. Stocks in news like after all over the market, we at the end we are going to select the stock for our investment. So we have to watch that those stocks which are into the news, that like IndusInd Bank with the Goldman Sachs ने खरीदारी किया है जिसमें कि उन्होंने 69 लाख एंड 66,712 के शेयर्स को 1166 के एवरेज प्राइस पे खरीदा है, वेयर एज उनके अगेंस्ट में राउट वन फंड्स ने 1,20 लाख शेयर्स बेचे हैं. So this is what the block deal happened in the IndusInd Bank. So some sort of activities can be observed. Suzlon Energy, there is a silver line on the cloud, you can say.
उन्हें एक डील मिला है, लाइक दे गॉट इन ऑर्डर ऑफ 144.9 मेगावाट्स का विंड प्रोजेक्ट का उन्हें आदित्य बिरला से एक प्रोजेक्ट मिला है. दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज फॉर दी सुजलॉन एनर्जी. एंड ऑल्सो सुजलॉन एनर्जी अभी बात करें इशू के लिए भी अभी न्यूज में बना हुआ है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 11th of October. So this is what the negative news for the Infosys ahead of the results which is coming in a Wipro and SCL technology, which can also Infosys act as a negative on a negative sides. Delta Corp yesterday Delta Corp का रिजल्ट आया जिसमें कि Delta Corp ने 19.50 का सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, एंड द प्रॉफिट्स रीच अप टू 68.25 करोड़. नेक्स्ट इज हॉट न्यूज, लाइक all over the globe markets are going down. So what is happening? So it is there, IMF has intervened and they said that they have downgraded the GDP forecast of the country, that's the India, by 60 basis point to 6.8%. as well as निर्मला सीतारमण ने भी एक स्टेटमेंट में भी बताया कि they also downgrade the GDP forecast for financial year 2023 from 7.2 to 7. So Indian forecast is to 7 and the IMF का जो forecast है 6.8 पर आ रहा है. Whereas IMF also forecasted और से उन्होंने अपना डाउनग्रेड किया है फॉर द जीडीपी ऑफ द ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट में, दैट्स फ्रॉम 3.2 से 2.7 उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए किया है. एज वेल एज वन बिग न्यूज दैट आई इनिशियली मेंशन कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो अब आने वाले 3 दिनों तक ही बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट कर पाएंगे थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो दैट इज अगेन नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट. सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स एंड द न्यूज वॉट एवर द फ्लो इज कमिंग, टेक्निकल चार्ट इज कमिंग, is bit the view is coming towards the downside. Only one silver line can be there कि अगर सीपीआई डेटा अच्छे आते हैं तो वहां से इंटरेस्ट रेट राइजिंग या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फियर खत्म हो सकता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है. So today's result is Wipro, SCL Technology, Astron, Next Digital, and Mangalam Industrial Finance. These are the results coming today, and you should look after these results. So data which I already explained that GDP month on month data आने वाला है by today, as well as CPI data का disclose होगा by today itself. So this is दो market कल बंद है, the US market, so market on Friday react करेगा इन data पर, but before that market will wait for these data to come, I mean results of these data. So that's it for the day. And last but not the least, one famous say from Warren Buffett: if you are not willing to own a stock for 10 years, don't even think about to owning it for 10 minutes as well. So what it means, अगर हम कभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए. Do not focus